Dear students, it's first unit chemical reaction and equations of your 10th class, and it is your first lecture. Now you go these topics in this video: physical and chemical changes, chemical reactions and characteristics, chemical equations, balancing of a chemical equations, making informations by chemical equations. Clear? We go on each topics step by step. First topic is the physical and chemical changes. So we go. First topic, chemistry. What is the chemistry? Chemistry. Clear? What is the chemistry? How you define the chemistry? Clear? Yeah, it is a branch of science which deals the study of composition of matter. Matter means substances. And the formation, or you can say changes, that it undergoes. This is the chemistry, branch of science which deals the study of the composition of matter, and the formation of that. इसका formation जहाँ की हमारे पास में undergo हो, और formation माने changes क्या क्या हो रहे हैं, इन्हीं changes के बारे में बात करनी है. These changes may be two types: physical and chemical changes. Clear? There are changes in chemistry. They are classified into two groups. First, the physical change. Physical changes. Clear? These are changes in which only physical properties are changed, and no change in chemical composition. Clear? Only physical properties are changed and no change in chemical composition of a substance. Clear? We take some examples. There are some examples. Melting of ice. First, when ice melts, it converts into water. Their only physical properties are changed. It is a solid, it is a liquid, but there is no change in chemical composition. In both cases,
it is a dihydrogen oxide. In the same way, vaporization of वाटर टू, इसको हीट करेंगे, ये वाटर वेपर्स में आ जाएगा. क्लियर? बट इन द बोथ केस केमिकल फॉर्मूला remains same. In the same way, sublimation. You know sublimation? In a sublimation is a process in which a solid that converts into gaseous state on heating, which again converts in solid on cooling, like camphor, जिसे कपूर भी कहते हैं. Clear? Kapoor directly converts into gas, and the vapors of camphor directly converts into camphor. In the same way, ammonium chloride, iodine, these are sublimate compounds. Like solid iodine and vapors of iodine. Now we go chemical changes. In these changes, chemical composition of a substance is changed. Where a new substance forms. न्यू सब्सटेंस फॉर्म, एक नया सब्सटेंस बन जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन we react hydrogen with oxygen, then water forms. There are some examples of chemical changing. Example, rusting of iron. Rusting of iron. In rusting of iron, iron converts into its oxide. Conversion of cane sugar into vinegar. घरों में आपने सुना होगा, जो गन्ने का रस होता है, केन सुगर. ठीक, केन सुगर का जो जूस होता है, उस जूस को हम यहां लेंगे, केन सुगर जूस. ठीक, इसी से विनेगर बनाया जाता है. बहुत स्लो प्रोसेस है. एक सब्सटेंस से दूसरा सब्सटेंस बनता है. Conversion of milk into curd. It is also a chemical change where composition is changed. Now we go.
chemical reactions. एक्चुअली में जो हमारे पास केमिकल चेंजेस हैं उन्हीं को हम लोग केमिकल रिएक्शंस कहते हैं. ठीक. A process of chemical change is said to be chemical reaction. इसको हम लोग कुछ एक्टिविटीज से पढ़ने की कोशिश करते हैं. ठीक. एग्जाम्पल जैसे कि एक एक्टिविटी आइए देखते हैं. एक्टिविटी नंबर 1. क्लियर. You take a magnesium ribbon. Magnesium ribbon. And you burn in air. Burn in air. Clear? आप देखेंगे इसमें dazzling light निकलेगी. And it converts into ashes. राख में बदल जाएगा. When you examine this ash, then you find out it's a new compound, magnesium oxide. That means it reacts with oxygen of air to give magnesium oxide. Clear? It occurs on heating. इसको मैंने बताया कि मैग्नीशियम रिबन को हम लोग जला रहे हैं एयर में. डेजलिंग इसको बहुत ही सावधानी से एक्सपेरिमेंट किया जाता है. डेजलिंग लाइट होती है वो आंखों पर बहुत बुरा इफेक्ट डालती है. इसलिए इसको जो है बहुत ही सावधानी से करना चाहिए. ठीक. स्पेक्टक्स उसको लगा करके गोगल्स लगा. इसी प्रकार से सेकेंड एक्टिविटी है. आइए वो देखते हैं. वो क्लियर. यू टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन. लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन. ये लेड नाइट्रेट का वाटर में सॉल्यूशन. एंड यू ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन. पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन. देन यू से येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा. एक टेस्ट ट्यूब में इसको लीजिए सॉल्यूशन को, दूसरे टेस्ट ट्यूब में इसको लीजिए सॉल्यूशन को, और दोनों को ऐड कर दीजिए. देन यू नो व्हाट हैपेंस. अ प्रेसिपिटेट, अ रेजिड्यू सेटल डाउन. इट इज कॉल्ड लेड आयोडाइड. इन दोनों के रिएक्शन से लेड आयोडाइड बनेगा और ये येलो प्रेसिपिटेट के रूप में बैठ जाएगा. पीपीटी मींस फुल नेम इज प्रेसिपिटेट. इट इज अ रेजिड्यू which settle down at the bottom, which is not dissolved in solution. In the same way, and another experiment also, you take a container and take or you can take a bottle in this way, and you take a piece of zinc in this way. Zinc. You take dilute HCl. Dilute HCl or hydrochloric acid.
इसके कॉर्क को बंद कर देते हैं इसमें हमने. You see here, they start bubbling. Zinc reacts with HCl to produce hydrogen gas, which starts bubbling and give pop sound. सुनाई पड़ती है. These are some activities. Now, characteristics of a chemical reaction. Their physical state is normally changed. Physical state is normally, compulsory नहीं है, normally changed हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोगों ने थर्ड एक्टिविटी में देखा था कि जो जिंक लिया गया इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कराया गया. इट गिव्स जिंक क्लोराइड and hydrogen gas. See here, it is a solid. It is a liquid. Liquid का ये aqueous solution होता है. It is also as aqueous solution. You can write there aqueous solution. In a liquid condition है, but it is in the form of gas. तो देख रहे हैं ये सॉलिड है, ये एक्वस है और यहाँ गैस बन रहा है. तो फर्स्ट नंबर पॉइंट मैंने आपको बताया कि फिजिकल स्टेट नॉर्मली चेंजेस. क्लियर. देयर आल्सो नेक्स्ट maybe change in color. Maybe change in color. You take copper sulfate solution. Copper sulfate solution. You add there some pieces of iron, or you can take iron shavings, Fe shavings. You know what happens there? It is a blue color solution. It slowly change into green color solution. You know why? Copper sulfate turns into ferrous sulfate solution. Ferrous sulfate solution. And copper is deposited on the iron. Reaction is in this form. It is of blue color, it is of green color. Now we go next. Maybe formation of precipitate. शॉर्ट में इसको पीपीटी लिखते हैं. Precipitate is a residue which settle down at the bottom and not dissolve. For example, this is silver nitrate aqueous solution. You add NaCl aqueous solution drop by drop. Then you obtain silver chloride
it is obtained as white precipitate, and NaNO3 aqueous solution forms. Clear? In the same way, there may be evolution of a gas. अभी हम लोगों ने एक्टिविटी में देखा था, then zinc reacts with HCl, this is hydrochloric acid, then it forms zinc chloride and hydrogen gas is formed. ये solid है, ये aqueous solution taken है, it is also aqueous solution and gas is evolved. And there may be change in temperature also. टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर आपका कम भी हो सकता है और ज्यादा भी. द एग्जाम्पल, when you dissolve sugar or dissolve glucose in the water, then its temperature down. You take 1 glass water and take its temperature with the help of thermometer, and you dissolve some quantity of glucose and again check its temperature by the sensitive thermometer. Its temperature decreases. It means this reaction absorbs heat. It is called endothermic reaction. In the same way, you take lime, जिसे चूना कहते हैं, and drop into water. You see, they start bubbling, boiling in the water, and it starts vapors of the water. It is the example of evolution of heat. Such reactions are called exothermic reactions. Now we go. Chemical equation. Clear? It is a symbolic notation of symbols and formula. Of a chemical reaction. Clear? It is expressed by two methods. एक तो आपका होता है वर्ड इक्वेशन, जैसे ये है आपका मैग्नीशियम reacts with the oxygen to form magnesium oxide. और नेक्स्ट है स्केलेटोल इक्वेशन. उसमें हम लोग सिंबल्स यूज करेंगे, क्योंकि किसी भी रिएक्शन को सेंटेंसेस में कहना एक प्रॉब्लम, वर्ड्स में भी लेंथी मैनर है. ऑक्सीजन सिंबल इज O2, फॉर मैग्नीशियम ऑक्साइड सिंबल फॉर्मूला इज MgO. तो जो सिंबल्स हैं, फॉर्मूले हैं, उससे हम लोग उस केमिकल रिएक्शंस को
एक्सप्रेस करते हैं। क्लियर? Now, balancing of a chemical equation. क्लियर? बहुत सिंपल सा है। जैसे मैग्नीशियम, ये आपका बैलेंस नहीं था रिएक्शन। हाउ यू बैलेंस टू इट? आप देख रहे हैं कि यहां 2 ऑक्सीजन था, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान रखें, बैलेंसिंग के समय कभी भी नंबर्स को सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट के रूप में नहीं ऐड करेंगे। ऑलवेज यूज नंबर्स एज ए कोफिशिएंट्स, एज ए मल्टीप्लिकेंट्स। 2 ऑक्सीजन है, यू मल्टीप्लाई बाय 2। नो, मैग्नीशियम बिकम्स 2, so multiply 2 for the magnesium. Now it is a balanced reaction. Clear? In the same way, H2 and O2 gives H2O. They are 2 atoms of oxygen, so multiply by 2. The hydrogen becomes 4, so multiply 2 becomes 4. It's a very simple method for balancing. Always multiply. Don't use superscript or subscript. Now some making informations. So the chemical equation. जैसे किसी की फिजिकल स्टेट को एक्सप्रेस करना हो, तो जिंक था आपका, इसको H2SO4 से आपको रिएक्ट कराना है। इट फॉर्म्स जिंक एज सल्फेट एंड हाइड्रोजन। फिजिकल स्टेट पहला है फिजिकल स्टेट। जिंक इज टेकन एज अ सॉलिड, to write S. It's taken as an aqueous solution, to take AQ. They are AQ. It is a gas, so you write G. किसी भी रिएक्शन में सॉलिड है, लिक्विड है, यदि लिक्विड है तो L लिख देंगे आप, एक्वस है तो एक्वस सॉल्यूशन, और गैस है तो G लिख देंगे। इन द सेम वे द नेक्स्ट कंडीशन ऑफ द रिएक्शन। कंडीशन मतलब है कि रिएक्शन को हीट करने पे रिएक्शन हो रहा है या बाय सनलाइट हो रहा है, उसके लिए। फॉर एग्जाम्पल, H2 reacts with chlorine to give HCl. This reaction occurs by the effect of light rays. So you take light. Heat है तो heat लिख देंगे, और heat. In the same way, third number, change in heat. कितना heat आपकी निकल गई। जैसे मैंने बताया था आपको, ग्लूकोज है, इसको हमने वाटर में ऐड किया, ठीक, और एक्वस सॉल्यूशन बना, एक्वस ग्लूकोज। अब यह हीट टेकन है हमारे पास में, हीट ली जा रही है, तो इधर हीट को ऐड करेंगे तो इधर जाएगी, तो आपकी ये माइनस में हो जाएगा हीट। जो भी वैल्यू हो उसकी 5 जूल 10 जूल उसको लिख देंगे। इन द सेम वे लाइम, it gives aqueous lime solution। यहां पर हीट निकलती है तो उसकी क्वांटिटी लिख देंगे, सबके सिमिलर से लिख देंगे। नाउ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स, जैसे जिंक है, HCl से रिएक्ट कर रहा था, जिंक क्लोराइड बना रहा है, तो कंसंट्रेशन, जैसे ये डाइल्यूट लिया जाता है हमेशा यहां पर, तो हम लोग डाइल्यूट लिख देंगे। कंसंट्रेट लेना है तो कंसंट्रेट लिख देंगे। नाउ इन द सेम वे, स्पीड ऑफ रिएक्शन, कोई रिएक्शन बहुत फास्टली हो रहा है
तो हम लोग यहां लिख देंगे फास्ट रिएक्शन, स्लो हो रहा है तो लिख देंगे स्लो रिएक्शन, ठीक है ना। स्पीड ऑफ रिएक्शन मैंने कहा, जैसे कहीं कहीं रिएक्शन में लिखेंगे, यहां देखेंगे फास्ट लिखा मिलेगा, कहीं देखेंगे स्लो लिखा मिलेगा। क्लियर? इसको आप वीडियो को देखें, समझें, एंजॉय करें और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। ओके।